What is the impact of globalization on male society? How imitation, competition and suggestions work for socialization. पंचायत इलेक्शन में जो प्रधान का इलेक्शन होता है वो किस तरीके से किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have a seat. Thank you so much, sir. So your preferred medium is English. Yes, sir. So introduce yourself. Sir, my name is Durgesh Deep, and I have done my schooling from Varanasi and Kota, and after that I did my graduation from IIT Kanpur in computer science and engineering, and after that I worked for a year as a software developer in Gurgaon. And during my college I developed a hobby for reading books, and during preparation of my civil services, just to de-stress myself, I started practicing Vipassana meditation. So you have variety of you are facing variety of culture, and you have faced in your life moving from Chandauli to Varanasi, then Kota, then Kanpur, then Gurgaon. What's your experience regarding the cultural diversity? Yes, sir. During my in Chandauli, like initial schooling, I was in village. I saw a rural background, and after that I moved to Varanasi, and I saw urban places, and then went to Kota, then Kanpur. And what's your experience regarding the cultural integration of India? I felt that there is so much diversity in India. In fact, within UP also. And it is well known that it's outside in different states we have diversity, like in Uttar Pradesh I saw, in Rajasthan I saw, in Gurgaon, Haryana. In culture of food, what is the difference in Varanasi and to Kota? Sir, in Kota I felt there was so much spices, chilies, and like in Uttar Pradesh we grow rice, so we are used to, we almost every day we take rice, but it is not so in Rajasthan. There mostly people eat wheat. Okay, and you are just mentioning that in Kota they use spices. Why in the hot climate or in the hot temperature zone they are using such kind of spices? What's the relation? Just I am asking because you have the scientific background. Yes, sir. So that's why I am asking. Sorry, sir. Right now I am not aware of it. Do you know about the thermal differences? Sorry, sir. No. Thermal differences of climate or atmosphere? Means there is a difference of temperature, average temperature between different places. What happens if there is a huge thermal difference in atmosphere? The range of the temperature will be very large during day also and along the year also. What happens? There is, like when in a substance, let's say, there will be expansions when the temperature goes high and contractions when the temperature goes very low. You are talking about the air molecules. I am talking about the other features of the atmosphere. एक तरफ तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ तापमान टेम्परेचर कम है, क्या होगा एटमॉस्फेयर में? सर, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जहाँ पे हाई टेम्परेचर लो है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा. वहाँ हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा? तो सर जो एयर है वो राइज करेगी एट लो प्रेशर पे, और इट विल डिसेंड. सरफेस पे क्या होगा? विंड फ्लो करेगी हाई टू लो. यस सर. ठीक है. विंड के साथ हीट मूव करेगी कि नहीं? यस सर, मूव करेगी. मूव करेगी. तो आउटसाइड टेम्परेचर अगर वह मान लीजिए कि 50 डिग्री है और बॉडी का टेम्परेचर वह 37 डिग्री है. यस सर. तो ऐसी स्थिति में हीट किधर से किधर मूव करेगी? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स लो टेम्परेचर. टुवर्ड्स लो टेम्परेचर. और अगर स्पाइसेस खाकर हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ये जो थर्मल डायनेमिक्स है ये वह में सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर. डिफरेंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है. डिफरेंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है. तो इससे हीट वह गर्मी क्या होगी?
फ्लो नहीं करेगी फिर। और गर्मी कम लगेगी मानव को। यस सर। यही आपसे जानना चाहता था। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। Durgesh, यस सर। you have such a great background. You did your BTech from IIT Kanpur and you are working as a site inspector. Why it is so? Sir, actually, when I worked as a software developer, I felt that I'm not interacting with people, and as I come from a rural background, so I was not feeling much comfortable in urban places. I wanted to work for people. You can practice some charity work, just work in an NGO. Why in administration? Sir, I wanted to for career and financial security also. Okay. Along with working for people by being closer to them. Okay, this is the real spirit behind that. Okay. Your optional is sociology. Yes, sir. Right? Define the term called society. And do you believe that society per se ensure ethical conduct in individual? Society is a group of people which have common belief, culture, and shared values. And society controls individuals through common rules and regulations. So it promotes ethical behavior in individual. Okay. Have you gone through the conception of socialization? Yes, sir. How imitation, competition, and suggestions work for socialization? Imitation is, sir, there's a reference group. Other people copy them and try to imitate their daily behaviors and cultures. And competition is the one, they are in conflicts with them to control some, let's say, economic resources or political power. And in suggestion, sorry sir, I have not gone through suggestion method. Okay, no issue. Tell me something about the role of the family for inculcation of human values. Families, sir, initially when a child is born, family is the first one. Primary socializations happen in family. Family inculcate ethical values and moral values in the child initially. Many times we have seen in the family system, we have taught our children that speak softly, respect women, respect elders. Yes, sir. But why we have seen so many social scenes nowadays? It is growing up gradually. Yes, sir. It is. There are many factors. I can recall some of them now. The weakening of the institution of the family, and now both the spouses are working, and they might be working at different locations, different cities, so they are not able to look after their child properly, and child is now more exposed to external environment through the use of technology, friends, and media, TV. Okay. In family, the role of mother is more important or the role of father? What is your opinion? I think they both are equally important, sir. Okay, very good. Tell me some 3 challenges of UP. So one is UP's literacy rate is low as compared to other How states. Can we enhance or ensure the 100% literacy in the government of UP? By investing more on primary education, sir. And although government of UP is taking various steps for this, by taking some initiatives so that dropout rates of the children get reduced, and more children come to the school. Suppose you are working as a SDM and you are facing a very restive crowd. They are very violent, they are very catastrophic upon you. How can you handle this situation? As far as law and order is concerned, considering the priority of law and order, how can you maintain the peace and order? So this can be done through various steps, first of all, talking. There would be some leader of that group. So it is. So you will proceed for the interaction of the leaders. Will not interact with the crowd, but will try to pacify that 1 or 2 leaders who are the one who are taking initiatives of this initiating violent. How can you pacify? You will use lathi charge, water cannon, firing,
first steps will be not to use such steps. First will be to talk to them, to pacify them with to solve their problems, and if these things would not work, then the hard steps will be taken. Thank you. Recently, in a meeting, the standard of India was, India suggested that conference of parties must focus on adaptation instead of mitigation. Yes, sir. Okay. What it means? What do you understand by this statement? Sir, as there are two aspects of climate change. One is adaptation and one is mitigation. Adaptation is that we are now facing the adversity of climate change. So instead of removing the root cause or the source, we'll adapt to it. And mitigation is like to remove the problem as a whole. Okay. So it is better to focus on adapting the things rather than removing the root cause. Sir, actually in mitigation will take a long time, sir. So that is why we have to work on both. But right now, to save the lives of the people, adaptation should also be taken in concern along with mitigation. Okay. What is polygamy? Polygamy is when a man has more than one wife. And it can be vice versa as well? That is polyandry, sir. Polyandry. Okay. And what is monogamy? Monogamy is when there are just two. Few days back, or I think last year, a girl married to herself. What is this marriage is called? That was, sir, sologamy. Sologamy. Okay. What is sologamy? Sir, this concept. Why sologamy is there? What it means? What you understand by sologamy? Why people are doing sologamy? Sir, this was, I think, one case, and a sologamy term also emerged that time only. If the ideas should be there, na? Yes, some sir, kind of idea should be there. Yes, sir. The idea is that people wants to be individual, remain free from the bond of any relationship. So they are going for sologamy. So if there is any need to marry himself or herself, or it can be done other ways also. If anybody want to live alone, yes, sir, he can, yes, or she can. Yes, sir. So why the process of marriage is there? I think it was like to get social recognitions, like to convey their status to society. Okay, I want to be alone. Yeah. And I love myself. I want to. I think the same, sir. Okay. Then no concept is there, but just for the publicity only. It is just for the publicity. Or not just for publicity, just for to convey the message to their family members or relatives that I'm happy as a singer. Okay, you are from Chandauli. Yes, sir. A Pashmi Vahini Mela organized every year there. आपको मालूम है पश्चिमी वाहिनी मेला? Sorry, sir. In Chandauli. शिवरात्रि मेला होता है, ये पता है. पश्चिमी वाहिनी मेला, sorry, I'm not aware. You are not aware of that. Okay, कोई बात नहीं. ये बताइए कि you have read about the Indian Constitution as well? Yes, sir. Okay. पंचायत इलेक्शन के बारे में बता सकते हैं? Yes, sir. ठीक है. तो पंचायत इलेक्शन में जो प्रधान का इलेक्शन होता है वो किस तरीके से किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? सर, प्रधान का इलेक्शन बाय डायरेक्टली होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? प्रधान या जो भी वहाँ का सरपंच, अदरवाइज जो भी नाम लिया जाता है. यस सर. तो कैसे इलेक्टेड है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? बाय दे विल बी इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा. Elected by the Gram Sabha, direct election. Direct election by Gram Sabha. It is mentioned in the constitution, or yes, sir, it is mentioned in the constitution. Okay. Right now, I am not able to recall the article. अच्छा, कैसे remove करेंगे? If some Gram Sabha want to, or Panchayat want to remove the Pradhan from his post, तो कैसे? What is the process of removal? Sir, I think there is no such process of removal of the Gram Pradhan. Gram Pradhan का removal हो ही नहीं सकता? मैंने नहीं पढ़ा सर अभी तक, और कभी ऐसा सुना भी नहीं. अच्छा, आपने सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में? नहीं सर. प्रधान बन गया तो बन गए. यस सर. चलिए, अच्छा, ठीक है. दुर्गेश, यस सर, you are a student of sociology, so must have read about the MS Srinivasan. Yes sir.
What's his theory? Sir, some of the concept given by him is like dominant caste and Sanskritization, and he gave field study to Indian sociology, after which many later sociologists also adopted this and enriched Indian sociology. This I can recall right now. What is desanskritization? Sorry, sir, exactly I'm not able to recall right now. This is happening in India right now. Desanskritization. Sir, let me Yes. Desanskritization is the, like, for demanding reservation system, people claiming to be of a lower caste. वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर दुर्गेश। आपने अच्छा गेस किया है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मेल सोसाइटी? सर, like migration, globalization is providing opportunity, employment opportunity, so male is migrating towards Divide the workplaces. impacts in two phases, the positive and negative impact, and then now they have tell some 2 or 3 points in each. Sir, positive one is they are getting more employment opportunities. Male are able to use globalizations to skill them. Skill is only related to male society, or it is the human being, for human being? Human being whole. Okay. And also marriage, they can go beyond their reasons for marriage. So you are not able to collect the positive impacts on male. These are 2-3 positive points here. Okay, and what are the negative impacts? Negative impacts, when they are migrating from their places, they have to face humiliation or harassment from the local people. My next question is migration started after the globalization of 1991? No, sir. Then why you are answering the migration is a one major impact of globalization? Okay, thank you, Durgesh. It was nice talking. Your interview is over. Thank you so much, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. May I come in, sir? Yes, come in. बैठिए। Thank you, sir. तो कैसा अनुभव रहा दुर्गेश आपका? आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। कुछ कुछ चीज़ें इंस्टेंटली रिकॉल नहीं, याद नहीं आ रहा था। जैसे कहाँ? जैसे ग्लोबलाइजेशन पे सर ने भी कुछ पूछा था, तो मुझे इंस्टेंटली व्हाट स्टेप्स टू बी टेकन इन कंट्रोलिंग वायलेंस और क्राउड। देखिए दुर्गेश, वहाँ डेफ तो रहेगा नहीं, लेकिन आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप तो ये बात बताएंगे कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में सेलेक्ट हो चुके हैं। यस सर। तो उससे आपकी प्रति उम्मीदें और दायित्व दोनों जो है वो बढ़ जाती हैं। यस सर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड जो है आपसे और ज़्यादा बेहतर ढंग से इंटरेक्शन करना चाहेगा। यस सर। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप लास्ट टाइम जो इंटरव्यू दिए वहाँ पर तो आपसे किस मीडियम में प्रश्न पूछा गया था? हिंदी इंग्लिश दोनों में सर। बोर्ड मेंबर जो है इंग्लिश में पूछ रहे थे या आप जवाब दे रहे थे इंग्लिश मीडियम? दोनों, उन्होंने हिंदी में भी पूछा और इंग्लिश में भी पूछा। ठीक है, हम लोग जो है वह जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश से ज़्यादा सहजता हिंदी में है। यस सर। तो एक तो जो है वह आपने, ठीक है, आपने आपका पूरा इंटायर जो है वह एजुकेशन जो है वही रहा होगा जो है वह इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जो है वह जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपका हिंदी में ज़्यादा सहज है। यस सर। यानी आपके थॉट जो है वह हिंदी में आते हैं। अच्छा। ठीक है, और तब आप उसको इंग्लिश में जो है समहाउ आप बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा फ्लो में रुकावट आ जाती है। अच्छा। तो वी विल सजेस्ट कि आप जो है वह उसको वहाँ हिंदी में जो है वह सहजता, और इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश तो आप बोलना जानते ही हैं, तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इंटरेक्शन जो है वो शुरुआत जो कीजिए, वो बोर्ड अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में ही जो है वो सहजता से, अंग्रेजी बोलने की वो अपनी तरफ से ज़रूरत नहीं है।
और अपेक्षाएं जो है वो बढ़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में आंसर भी जो है वो आपका निश्चित तौर पर जो है वो और बेहतर जो है वह आना चाहिए। और ख़ास करके जैसे जो है वह मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन में आप नहीं बता पाए तो भी जो उतना ये बुरा नहीं था जितना कि आपने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जब चर्चा हो रही थी और पंचायती राज और जब हम लोग पे जब चर्चा कर रहे थे तो प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है, तो आपने कह दिया कि हटाया नहीं जा सकता। आप खुद सोचिए, इस देश में लोकतंत्र है जहां प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है, तो एक प्रधान को नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं सर। कल्पना के भी विरोध की बात है ना। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब है आप डेमोक्रेसी के थीम को वहां नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि कैसे हटाया जा सकता है। तो इसमें माफ़ी जो है वह मांगना है कि सर जो है वह अभी इस प्रक्रिया को मैं नहीं जान रहा हूँ, ठीक है। उसके अपॉइंट करने के संदर्भ में भी जो है जो आप आंसर कर रहे थे वो आंसर जो है वह थोड़ा कहा जाए कि फैक्चुअली जो है वो सही नहीं था, तो थोड़ा उसको जो है वह देख लीजिए जो है वह उसको, ठीक है। और अभी आपके पास इंटरव्यू का समय जो है वह ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा उसको जो है वह पंचायती वगैरह एक ऐसा चीज़ है जहाँ क्लियर व्यू होना ही चाहिए, तो उसमें थोड़ा 15-20 मिनट का जो है वह आपको समय लगेगा देखने में, 15-20 मिनट में जो है वह देख लीजिए। बाकी चूँकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसलिए जो है वह हम लोग भी बहुत ज़्यादा सुझाव कंटेंट के पार्ट पर काम करने के लिए जो है वह नहीं जो है वह कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपने ग्लोबलाइजेशन वगैरह में क्या आंसर किया नहीं किया, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क जो है नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो आपका व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में और क्या जो है रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ये थोड़ा एक जो है बस सिटिंग पोस्चर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप और पीछे हट के बैठिए, थोड़ा और पीछे जाइए, हाँ, और जो है पीठ जो है वो थोड़ा सा लगाइए अपने चेयर पर, हाँ। अच्छा, अब सहजता महसूस हुई पहले से ज़्यादा? यस सर। है ना। तो ऐसी स्थिति में आप जितना सहज रहिएगा आप उतने जो है वह कॉन्फिडेंट दिखिएगा भी, और इनर कॉन्फिडेंस भी आप में रहेगा। यस। दोनों बातें हैं। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए जो है वो इस प्रकार। वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि आप यंग ब्लड हैं। यस सर। तो यंग ब्लड हैं तो ऐसी स्थिति में जो है वह कम जो है वह ऊर्जा से बात करना उतना जो है वह सहज नहीं होता है जितना सहज कि थोड़ा ऊर्जावान दिखे। तो कम से कम 10% तक आप समझिए कि वॉल्यूम आप इंक्रीज कर सकते हैं ये। और जो है बाकी आपका जो अटायर वगैरह है सब बहुत प्लीजेंट है, सब कुछ अच्छा है, इतने अच्छे बैकग्राउंड से आप पढ़कर जो है वो आए हैं चीज़ों को। यस सर। और क्वेश्चन के थीम को समझने का प्रयास किया, नहीं थीम समझ पा रहे हैं तो जो है वह उसको आप जो है वह सॉरी बोल सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में ही जो है वह हुआ, जब हम लोग जो है ने थर्मल डिफरेंस के बारे में जो है वह पूछा तो आप क्वेश्चन के थीम को नहीं समझ पाए, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया था कि आप जो है वह साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक। तो साइंस के हिसाब से बताना था, हीट का ट्रांसफ़र जो है रोकने के लिए जो है वैसा होता है, तो उसके थीम को जो है वह समझना जो है वह होगा। ओके सर। और अगर थीम नहीं समझ में आता है तो आप सॉरी बोलकर जो है वह क्या कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, और आप जो है उसको अननेसेसरी का लिंगर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है मिस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही प्रयास करना, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते।